Hello, Assalamu alaikum, dear students. I'm Daud Tanveer Gill, your chemistry teacher. So today I will be discussing with you the questions of worksheet number 2 of the topic rate of reaction. Let's proceed with the questions. So I will start with the first question. The first question, as you can see, the reaction is between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid. In this, carbon dioxide gas is released. So we have to select a suitable apparatus through which we can easily determine the rate of reaction. Three options हमारे पास available हैं. हमने उनमें से कोई सी suitable option select करनी जिससे हम rate easily इस reaction का find कर सकते हैं. Let's look at each options in detail. Option number one में अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है. सही है. और हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट्स का मास है वो भी कम हो रहा है. सो यस, दिस इज अ सुटेबल ऑप्शन. With time we will see that the mass of the reactants keeps on decreasing. So yes, we can find the rate through this option. Okay, so this is a suitable option. What about option number two? In this, again, we are pouring HCl, and in the flask there is calcium carbonate. Gas is being produced, and this is collected in the gas syringe. So, with time, we can measure the volume of gas being produced. Yes, this is also a correct option. अगर हम ऑप्शन नंबर थ्री में देखें, गैस इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है, बट इट इज कलेक्टेड इन द वाटर और मेजरिंग सिलेंडर अपसाइड डाउन इमर्स किया गया है. सो क्या होगा? You already know that water dissolves in carbon dioxide dissolves in water to form carbonic acid, a weak acid. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर डिसॉल्व हो जाए तो ये एक कंपाउंड बनता है H2CO3. बहुत एक वीक एसिड होता है. तो ये तो हमें रेट डिटरमिन करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि हमारी गैस सारी की सारी कंज्यूम हो रही है. तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. ये कार्बोनिक एसिड आपकी अक्सर ये होती है फिजी ड्रिंक्स लाइक कोको कोला, इनमें भी थोड़ी बहुत होती है. So the third option is not correct. So the correct option is one and two. Right. Let's come towards question number two. Which change in condition for the reaction between zinc and dilute sulfuric acid increases the rate of reaction by lowering the activation energy? अब question is demand ये कर रहा है कि rate of reaction increase भी हो और plus by the lowering of the activation energy. So how can this be achieved? This is clearly indicating to a catalyst. Only a catalyst can lower the activation energy. So option A is right. कंसंट्रेशन से एक्टिवेशन एनर्जी कभी कम नहीं होती और सरफेस एरिया से भी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही रहती है, टेम्परेचर से भी. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओनली कैटलिस्ट कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. Let's go towards question number three. Okay. Again, there is a reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid, and it is measured in three separate experiments. तीन experimental conditions में इसको analyze किया गया है इस reaction को. Okay, let's read it one by one. इसको देखते हैं डिटेल में. अच्छा, experiment number one में calcium carbonate is powdered and an excess of hydrochloric acid is used. In experiment number two, the calcium carbonate is in lumps and an excess of hydrochloric acid is used. अब ये देखें क्लास, डिफरेंस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे लम्प्स में है. ओके. ग्राफ प्रोवाइडेड है. सो व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कर्व फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. और एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री में क्या कह रहा है? द कैल्शियम कार्बोनेट इज इन लम्प्स एंड इनसफिशिएंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड. ठीक है, अब इसको हम टर्न बाय टर्न देखते हैं.
अब ये पाउडर्ड में है तो इसका डेफिनेटली ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होना चाहिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का। तो ये जी ये है, इसको हम 1 लेबल कर देते हैं। राइट। और अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखें, द कैल्शियम कार्बोनेट इज इन लम्प्स एंड एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज। तो ये इंडिकेट कर रहा है वाई, वाई जो है हमारा 2 है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ओके। 3, द कैल्शियम कार्बोनेट इज इन लम्प्स एंड insufficient hydrochloric acid is used. Again, it is saying that it is in lumps. अब lumps में तो इसका gradient कम होना चाहिए, but it is also saying that insufficient hydrochloric acid is used. अगर hydrochloric acid insufficient है, तो जो हमारा जो mass है वो कम डिक्रीज होगा, कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो वी विल ऑब्जर्व दैट लेस mass would reduce. So less mass किस में reduce हो रहा है? X में। So the X is representing experiment number 3, right? और इसका आप देख सकते हैं, इसका जो स्लोप है वो भी लेस स्टीपर है। सही है, बिकॉज इट इज यूज इन लम्प्स। और 1 का आप देख लें क्योंकि उसमें पाउडर फॉर्म है, तो 1 का सबसे स्टीपेस्ट है। 1 का सबसे स्टीपेस्ट है। अब नाउ वी विल लुक एट द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, कि कौन सी ऑप्शंस इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैच करती है। Which statement is correct? Experiment 1 is shown by curve X. No, this is incorrect. Experiment 1 is shown by Y. No, this is also incorrect. Experiment 2 is shown by curve Y. Yes, this is correct. We have successfully identified the curve Y. It is the second experiment. And experiment 3 is shown by curve Z. Uh, no, this is also incorrect. So, क्लास इस तरह का अगर क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आता है तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट वी विल लुक एट द पाउडर्ड एंड द लम्प फॉर्म। पाउडर्ड का हमें पता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसका जो है स्टीपनेस सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट 1 को आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद 2 और 3 को। तो इसी तरह आपने क्लास इस तरह मतलब आइडेंटिफाई करना है कर्व, डिफरेंट कर्व्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। राइट। लेट्स मूव टूवर्ड्स question number 4. This we also studied in the class, the reaction between thiosulfate and HCl. Basically, in this, the fact of temperature is being analyzed on the rate of reaction. ये हमने क्लास में भी पढ़ा था कि एक येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो विद टाइम द क्रॉस और द मार्क बिगिन टू डिसअपीयर, तो वो हमें नजर नहीं आता। अब वो इस एक्सपेरिमेंट में क्या पूछना चाह रहे हैं कि विच apparatus इज नीडेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। So class, what we will be needing is that we simply need a thermometer, because हमने टेम्परेचर का फैक्ट एनालाइज करना है। तो आपने थर्मोमीटर की ऑप्शंस को एकदम देख लेना है। ये देखें, अब ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन, डू वी नीड अ बैलेंस फॉर दिस? बैलेंस हमें नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग द चेंज इन mass. So balance would not be required for this. I will simply cross this option. Now we are left with option number C and D. A burette gas range thermometer. Since no gas is being produced, गैस हो रही है प्रोड्यूस लेकिन हमने उस एंगल से नहीं करना। तो दिस इज क्योंकि हमने गैस के विद रिस्पेक्ट रेट नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ रेट फाइंड करना है कि ये जो क्रॉस है कितने टाइम में डिसअपेयर हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है, because we have to note the time at which the cross disappears. So the correct option is D. D is the correct option. इसका एक मैंने ग्राफ भी आपको क्लास में कराया था स्टूडेंट्स, के टाइम टाइम फॉर डिसअपेरेंस ऑफ द क्रॉस, ये वाई एक्सिस पे था और एक्स एक्सिस पे था टेम्परेचर। ये एक मैंने आपको बताया था। तो हमें क्या चाहिए होगा? मेजरिंग सिलेंडर, so that we could pour the sodium, sorry, the aqueous sodium thiosulfate, a stop clock
to note down the rate, and a thermometer so that we can vary the temperature of the reaction mixture, right? Okay, let's move towards question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें, catalysts alter the rate of chemical reaction. Which statement correctly describes the fact of adding a catalyst to a reaction? Okay, all particles have more energy and move faster. No, that is not true. Catalyst में तो students ये होता है कि that catalyst provides an alternate pathway and they have lesser energy, so they can achieve to product more easily. आपको ये पता है कि जैसे मैं बस एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप सबके लिए ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये देखें, अगर ये रिएक्शन लाइक ऐसे जा रहा है, कैटलिस्ट क्या करता है, इसको डिक्रीज कर देता है। ये हमारे पास मतलब आ गया इसका प्रोफाइल डायग्राम। इट्स अ रफ डायग्राम। बेसिकली इट रिड्यूसेस द, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस फॉर यू, बस ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड, yes, that is correct. More reactants collide with enough energy to react, yes. Mostly reactants की होती है एनर्जी कम हो चुकी होती है by the lowering of the activation energy, so they are more able to collide frequently, yes. uh, the third statement is correct, क्योंकि मोस्टली रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो चुकी होती है तो वो ज़्यादा इजीली कोलाइड कर सकते हैं। तो statement number 2 and 3 are correct. So which option has statement number 2 and 3? Yes, the correct option is C. Okay, let's do question number 6. एक स्टूडेंट जो है वो एक रिएक्शन स्टडी कर रहा है बिटवीन मार्बल चिप्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या नोट कर रहा है, द लॉस इन मास ऑफ द रिएक्शन फ्लास। ये हमने जैसे पहले भी स्टडी किया था, लेकिन ये क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप है ये। अब वो ये कह रहे हैं कि ही हैज गॉट टू कर्व्स। सो कर्व डिफरेंस क्या मतलब है कर्व पी और क्यू में? ओके, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, a catalyst is added in P. अब स्टूडेंट्स एज वी नो दैट कैटलिस्ट ऐड करने से स्टीपनेस तो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन पी की स्टीपनेस कम है, so दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। पी तो बल्कि स्लो है, क्यू फास्टर है। क्यू का आप देखें ग्रेडियंट ज़रा स्टीप है, पी का लेस स्टीपर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज टोटली इनकरेक्ट। इट डज नॉट complies with the question or agrees with the question. A higher temperature is used in P. अगर पी का हाई टेम्परेचर यूज होता है तो उसका अगेन वही बात है कि उसका जो ग्रेडियंट है ज्यादा स्टीप होता है, उसका लेस स्टीप है। दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट अगेन गेट्स eliminated. ऑप्शन नंबर सी, बिगर मार्बल चिप्स आर यूज इन क्यू। ओके, तो क्यू में वो कह रहे हैं कि बिगर मार्बल चिप्स यूज किए गए हैं, बट क्यू का आप देखें जो ग्रेडियंट है वो सबसे ज्यादा है, स्टीपर है। तो ये बात भी मतलब रॉन्ग प्रूव हुई है, वरना क्यू का देखें लेस स्टीपर होता है, क्योंकि देखें जितना आप बिगर साइज यूज करेंगे, बिगर मार्बल चिप्स, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करने से बल्कि उसका कम होना चाहिए, इसका तो क्यू का ज्यादा है। इफ यू लुक एट द ग्राफ पी एंड क्यू, so again this option is also incorrect. Now we are left with option number D, hydrochloric acid is more concentrated in Q. Yes, this is correct, बिकॉज आप देखें Q का जो ग्रेडियंट है वो सबसे स्टीपर है एज कम्पेयर टू P। इसका स्टीप ग्रेडियंट हमें बता रहा है कि एचसीएल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स या जो डिक्रीज इन मास है वो ज्यादा स्टीपर है या फास्टर है एज कम्पेयर टू P। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। Okay, let's move towards question number 7. In this reaction, the reaction is between magnesium and dilute sulfuric acid. The magnesium is in excess. Again, there are three experimental conditions. In the first condition, there are large pieces of magnesium. In the second, there are small pieces.
and in the third there are large, but the concentration of the acid has been increased. Okay, let's look at this question. First of all, अब ये देखें कि एक्सपेरिमेंट नंबर वन में लार्जर पीसेस और एक्सपेरिमेंट नंबर टू में स्मॉलर पीसेस हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट, तो टू का ग्रेडियंट वन से ज्यादा होना चाहिए। सो बाय लुकिंग एट द ग्राफ, जो हमें लगता है कि जो एक्स है वो टू है, ये टू हो गया ऑन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये देखें ये टू हो गया। मैं क्लियरली आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, क्योंकि टू में स्मॉलर पीसेस ऑफ मैग्नीशियम और स्मॉलर पीसेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा स्टीपर होगा। और वाई में आप देखें लार्जर पीसेस आर यूज्ड, सो लार्जर पीसेस का गेन जो है वो ग्रेडियंट कम होगा, तो ये वाई होगा, वन होगा एक्सपेरिमेंट नंबर वन। इसका ग्रेडियंट कम है क्योंकि लार्ज पीस यूज हो रहा है। डब्ल्यू की बात करें, लार्ज पीसेस ऑफ मैग्नीशियम आर यूज बट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इज इंक्रीज। अब देखें, लार्ज पीस इंक्रीज तो हुए हैं, यूज तो हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी एसिड की इंक्रीज की गई है। उससे क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट उसका इन सब से ज्यादा हो जाएगा। सो जो डब्ल्यू जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री है, बाय लुकिंग एट द ग्राफ। So which option has these conditions? Let's look at the provided options. Okay, x जो है हमारा टू है। ऑप्शन नंबर ए और डी देखें, इसमें x हमारा टू, बाकी में नहीं है। We'll shortlist the options. So finally, the shortlisted options are A and D. अच्छा, अब इनमें आप ये देखें कि y जो है वो वन होना चाहिए। y, ये देखें आप, एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो है वो y रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री w रिप्रेजेंट कर रहा है। So yes, this is the correct option. So we do such types of questions by, analyzing the provided conditions, and then we, you know, uh, verify it from the graph. इस तरह हम इसको क्वेश्चन को टैकल करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर एट। This is a decomposition reaction. In this, the catalyst is being used, और वो catalyst कौन सा यूज हो रहा है, मैगनीज 4 ऑक्साइड। This we also studied in the class. अब वो कह रहा है कि which statement is correct when a catalyst is added to the aqueous hydrogen peroxide. Okay, the catalyst increases the activation energy for the reaction. This is totally incorrect. A catalyst cannot increase the activation energy. Instead, it decreases the activation energy. So this is incorrect. Option number B, the catalyst is used up during the reaction. This is also incorrect. A catalyst never gets used up. It remains the same. जितना शुरू में होता है उतना ही एंड पे होता है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसको मैंने ये भी बताई थी कि अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को अगर हम फिल्टर करें तो हमें सेम अमाउंट ऑफ जो है मैग्नीशियम फोर ऑक्साइड मिलेगी जितनी हमने शुरू में ऐड की थी, तो अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, द गैस सिरिंज फिल्स अप मोर क्विकली व्हेन द कैटलिस्ट इज एडेड। यस, मतलब कि रेट इंक्रीज होता है कैटलिस्ट के ऐड करने से। यस, इट विल फिल अप मोर क्विकली, दिस इज ट्रू। दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। What about D? The total amount of oxygen produced increases when the amount of catalyst is added. No, it has no such effect. Only the rate increases. The amount has no such link with the amount of catalyst. So this is not a correct option. The correct option is C. Okay, let's move towards question number 9. A student wrote two conclusions about calcium carbonate. Conclusion number one, the reaction with dilute hydrochloric acid is faster with powdered calcium carbonate than with larger pieces of calcium carbonate. ठीक है। Conclusion number two, grinding larger pieces of calcium carbonate to form powder increases the surface area। अब ये देखें क्लास, अब वो कह रहा है कि उसने conclusion number वन में
रिएक्शन किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। देन विद उसको पता चला कि जो रेट है वो फास्टर है पाउडर्ड के साथ एज कम्पेयर टू लार्जर पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कंक्लूजन टू ये बता रही कि ग्राइंडिंग से सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ओवरऑल इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन समझें, कंक्लूजन नंबर टू वन को एक्सप्लेन कर रही है। दोनों एक ही बात कर रही हैं, बोथ आर टेलिंग द सेम थिंग, बट द कंक्लूजन टू इज बेसिकली elaborating or explaining the conclusion of one. So which option statement has this explanation if you look at the provided options? So by looking at the provided options, both the conclusions are correct, and conclusion two explains conclusion one. Yes, this is correct. What about B? Both conclusions are correct, but conclusion two does not explain conclusion one. No, this is incorrect. दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि टू वन को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये गलत है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो रही है। So this is not a right option. Okay. C. Conclusion one is correct, but conclusion two is not correct. इसमें भी देख लें, contradictory एक statement आ रही है, ये भी गलत है। Conclusion two is correct, but conclusion one is not correct. ये भी गलत है। दोनों एक दूसरे के opposite जा रही हैं। Basically correct option है A. A option correct है, as I explained earlier. Okay. Question number 10. Let's do this question. क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि a student wants to show that the rate of reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid doubles for every 10-degree rise in temperature. अब वो कह रहा है कि what essential apparatus must the student use? Okay. अब वो पहला हिंट तो देख लें। सबसे पहले वो कह रहा है कि डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को चेंज करेगा। सही है। अब चेंज वो कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। आप सबसे पहले वो ऑप्शंस अंडरलाइन कर लें जिसमें थर्मोमीटर यूज हो रहा है। सो वी हैव फाइनली शॉर्टलिस्टेड द थ्री ऑप्शंस। अब हम और डिटेल्स को देखते हैं। बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें, बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, क्लॉक। क्लॉक तो हमें डेफिनेटली चाहिए, तो वो इन तीनों में है। अच्छा, अब प्रोड्यूस क्या हो रहा है इसमें? द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। और यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो देयर वुड बी अ डिक्रीज द mass of the reactant. So yes, we need a balance for this. लेकिन पिपेट का इस रिएक्शन में कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। पिपेट तो सिर्फ होता है कि वो लिक्विड्स को थोड़ा कुछ देर सक करता है, फिर उसको ट्रांसफर करता है। तो पिपेट का ऐसा इस में कोई रोल नहीं है। सो वी वोंट सिलेक्टिंग द पिपेट ऑप्शन, वी विल जस्ट क्रॉस आउट द पिपेट ऑप्शंस। बैलेंस हमें चाहिए ताकि हम उसका चेंज इन मास नोट कर सकें। measuring cylinder so that we can pour the dilute hydrochloric acid into the reaction mixture. और क्लॉक हमें चाहिए ताकि हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन एफिशिएंटली मेजर कर सकें। सो यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड वी आल्सो नीड अ थर्मोमीटर ताकि हम वो टेम्परेचर वेरी भी कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें, इट इज सेइंग दैट an experiment is carried out to measure the rate of reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid under two different conditions. The mass of magnesium and the number of moles of hydrochloric acid are the same in both the experiments. Okay. अब वो कह रहे हैं कि ये देखिए हमें दो ग्राफ्स मिल रहे हैं। तो which statements could explain the difference between graph 1 and 2? Okay, graph 1 results are obtained at a higher temperature. Yes, it is right. Graph 1 में देखें the gradient is steeper. So yes, there could be a higher temperature due to which we are getting such curve. The second statement, graph 1 results are obtained by using hydrochloric acid that is more concentrated. ये भी ठीक है. It also has a steeper curve.
कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमें पता है कि स्टीपनेस इंक्रीज हो जाती है. दिस ऑल्सो इज करेक्ट. Statement 1 is also correct. 2 is also correct. What about the third one? Graph 1 results are obtained by using smaller pieces of magnesium. Yes. उससे भी हमने पढ़ा था कि ज़्यादा स्टीपनेस ज़्यादा हो जाती है, ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. यस, दिस ऑल्सो complies or agrees with the question statement. So which options has all the three statements in it? Yes, it's option number A. So yes, the correct answer is A. So this is the final answer for this. So students, we have finally completed this worksheet. I hope all of you have understood the questions. So if you have any questions, feel free to ask. We'll further discuss it again. Okay. Allah Hafiz. Bye. Signing off. Take care.